including aligning research ideas with funding priorities, presenting feasibility, and avoiding common pitfalls. And we hope the discussion will strengthen your ongoing as well as future research projects. I'm currently Chief Editor of Annals of King Edward Medical University, and many times the articles which we come across, there are so many significant flaws in methodology, and many of the things that is we need to capacity building and start from the medical students so that you have that experience, and when you go in the following in your career, whatever specialty you choose, you can build on the basic skills and learn as you go. We are all learning despite having experience. It's now my pleasure to introduce our facilitator who will start the session today, followed by Dr. Javed, who will be joining. Dr. Zishan Sarwar brings extensive experience in research design and grant development. He is currently working as Associate Professor General Surgery and Additional Control and Examination at King Edward Medical University, a dedicated and academic surgeon and medical educator known for his strong contribution to the undergraduate as well as postgraduate medical education. Dr. Zishan Sarwar has played a key role in organizing major academic events, surgical workshops, and faculty developing initiatives. He is also one of the members of the editorial board of Annals of King Edward Medical University. Please join me in warmly welcoming Dr. Zishan Sarwar to share his insights with us today. And I would request all participants to actively engage and interact, because many of the things theoretically you will learn, but I think asking questions, and Dr. Zishan is an excellent sort of person to answer those queries along with our chair and co-chair. So please do ask questions, do engage in the discussion, because it will be helpful to have an interactive session. Over to Dr. Zishan Sarwar, please. हमारा रिसर्च क्वेश्चन है आउटकम ऑफ फिनोल एप्लीकेशन इन पाइलोनाइडल साइनस डिजीज इन टर्म्स ऑफ हीलिंग। ये हमने अपना रिसर्च क्वेश्चन फाइनल किया, बहुत सारा डाटा ढूंढ के हमने बुलियन टर्मिनोलॉजी यूज़ की, हमने बहुत सारा लिटरेचर ढूंढा, तो हमें पता लगा कि यार जो पाइलोनाइडल साइनस डिजीज़ की एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसमें हम फिनोल डालते हैं उसके अंदर, और वो फिनोल डालने से वो पाइलोनाइडल साइनस जो है वो हील कर जाता है। तो क्या फिनोल, ये जो बात है ये वाकई ऐसी ही है? इसके ऊपर हमने अपनी सिनॉप्सिस लिखनी है। तो बच्चे, इंट्रोडक्शन लिखने का स्टाइल क्या है? आप लोग अगर सपोज मैं आपसे कहूं कि जी मुझे आउटकम ऑफ फिनोल एप्लीकेशन पाइलोनाइडल साइनस डिजीज इन टर्म्स ऑफ हीलिंग, आपने इसके ऊपर इंट्रोडक्शन लिखना है, तो आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? बैकग्राउंड का मतलब क्या होगा? पाइलोनाइडल साइनस डिजीज की कोई डेफिनेशन देंगे, बताएंगे क्या चीज क्या होती है, और ठीक है, पाइलोनाइडल साइनस डिजीज को एक्सप्लेन करने में थोड़ा बताओ, आप उसकी डेफिनेशन बताएंगे, पाइलोनाइडल साइनस डिजीज है क्या, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या है उस डिजीज की, और कुछ बताना चाहेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर? और कुछ बताना चाहोगे? इंट्रोडक्शन में लिखोगे क्या? और आप बताओ, कुछ आइडिया दो, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखी गई, आगे चलो। साइन एंड सिम्टम्स हो गए, कुछ इन्वेस्टिगेशंस हो गई, डिजीज बर्डन बताना चाहिए, प्रीवियस रिसर्च पे जो काम हो उसके बारे में बात होनी चाहिए। रिसर्च गैप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मैडम? रिसर्च गैप आपका ख्याल है क्या हो सकता है यहाँ पर? अच्छा, अब देखिए, हम जब
बच्चा लिखता है ना मैडम, पाइलोसाइनस, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम ये क्या करते हैं, हम शुरू होते हैं कि जी पाइलोनाइडल साइनस डिजीज की डेफिनेशन क्या है, टियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी होती हैं डायग्नोज करने के लिए, और डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। और फिर जब हम उसकी बात करते हैं रैशनल की, तो बहुत कॉमन सा रैशनल जो आपको अपनी सिनॉप्सिस में लिखा हुआ नजर आएगा। Why we are conducting this study? As no study is conducted in our institute or country, so we are going to conduct this study. सबसे कॉमन रैशनल जो नजर आएगा ना आपको, वो ये नजर आएगा। बच्चा पहली बात आपके साथ ये करेगा, आपको ऐसे इंट्रोडक्शन लिखे नजर आते हैं। बात ऐसी हो रही थी ना, बात ऐसी हो रही थी। ये गलत तरीका कार है लिखने का। इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं लिखे जाते। जब भी आपने रिसर्च प्रपोजल का इंट्रोडक्शन लिखना है तो वो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो अगर ऐसे नहीं लिखा जाएगा तो फिर कैसे लिखा जाएगा? डॉक्टर सन आगे आ जाए, आगे आए। मैडम आप ही आ जाए, आगे आगे करें। तो इंट्रोडक्शन लिखने का बेहतर फॉर्मेट क्या है? इंट्रोडक्शन शुड हैव 3 पैराग्राफ्स। पहले पैराग्राफ में इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक या डिजीज का बर्डन, बताओ कि ये जो आपका टॉपिक है ये कितने बड़े एरिया को एड्रेस करने जा रहा है, इससे कितनी पॉपुलेशन को फायदा होने जा रहा है। इसका फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। आप ये भी बता सकते हैं कि जी पाइलोनाइडल साइनस डिजीज की प्रेवलेंस क्या है। आप ये भी बता सकते हैं कि कितने लोग हैं जिनकी डेली लाइफ इफेक्ट होती है इस डिजीज से। आप ये भी बता सकते हैं कि दुनिया में एक साल में या एक महीने में कितने ऑपरेशन पाइलोनाइडल साइनस डिजीज के होते हैं। तो आपने ये बताना है कि आपके इस टॉपिक से कितने लोगों ने इफेक्ट होना है। तो ये, इसमें कोई डेफिनेशन पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई पैथोफिजियोलॉजी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आना है। तो पहला पैराग्राफ इस पे रहेगा। सेकंड पैराग्राफ शुड बी, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें, डायरेक्ट अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें। टॉपिक क्या है? पाइलोनाइडल साइनस डिजीज में एक केमिकल डाल के उसकी हीलिंग देखनी। इसका मतलब है आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं। तो आपको उसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी, आपको उसकी डेफिनेशन, इन्वेस्टिगेशन पढ़ा, आपको डायरेक्ट जंप करना है अपने टॉपिक के ऊपर। आपको डायरेक्ट जंप करना है अपने टॉपिक के ऊपर, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। और तीसरा पैराग्राफ रैशनल के ऊपर आएगा। आप बताएं कि आपका नॉलेज गैप क्या है, आप किस गैप को एड्रेस करने जा रहे हैं, इस गैप के बारे में आप बात करें। और ये जो है ना, ये रैशनल नहीं है जो हमने बनाया हुआ है कि जो हमारे म्यू हॉस्पिटल में कभी स्टडी नहीं हुई या पाकिस्तान में कभी स्टडी नहीं हुई तो इसलिए हम करने जा रहे हैं। देखो, कुछ चीज़ें गाइडलाइन में जा चुकी होती हैं। आप सिंपल सी बात करो, गॉल ब्लैडर डिजीज है, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है, ओपन कोलिसिस्टेक्टमी की बात खत्म हो चुकी। अब तुम कहो कि जी मेरी पोस्टिंग मंडी बहाउद्दीन में हुई है, वहां पर लैब कोली कोई भी नहीं करता, तो मैं एक स्टडी करना चाहता हूं कि जी लैब कोली बेहतर है या ओपन कोली बेहतर है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है कि मंडी बहाउद्दीन में लैब कोली नहीं हो रही, ये दुनिया की प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये जो आप जियोग्राफिकल किस्म के रैशनल बनाते हैं ना कि जी पाकिस्तान में ये काम नहीं हुआ या म्यू हॉस्पिटल में काम नहीं हुआ, तो उस बीमारी को भी जियोग्राफिकल पैटर्न में कोई चेंज नजर आनी चाहिए। अगर उस बीमारी में कोई जियोग्राफिकल चेंज नहीं है, लैब कोली जैसी मंडी बहाउद्दीन में हो रही है वैसे ही यूके में हो रही है, वैसे ही यूएसए में हो रही है, तो आप किस बात का रैशनल बना रहे हैं? तो आपकी डिजीज का पैटर्न अगर जियोग्राफिकल है तो जियोग्राफिकल रैशनल बनेगा। आपकी डिजीज का पैटर्न जियोग्राफिकल नहीं है तो जियोग्राफिकल रैशनल नहीं बनेगा। जियोग्राफिकल पैटर्न से ऐसा समझें, डीवीटी प्रेवलेंस पे बात करें।
अब डीवीटी प्रेवलेंस जनरल सर्जिकल पॉपुलेशन में ये बात आती है कि जी 25% रिस्क है जनरल सर्जिकल पॉपुलेशन को। इसका मतलब है एवरी फोर्थ पेशेंट एडमिटेड इन जनरल सर्जिकल वार्ड कैन हैव अ डीवीटी। अब ये आपको पता है कि हम यहाँ पर कितना डीवीटी प्रोफिलैक्सिस देते हैं और हम कितनी डीवीटी देखते हैं। फिर आप जब लिटरेचर सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा, आपको कुछ एविडेंस मिलेंगे कि एशियन पॉपुलेशन में डीवीटी की प्रेवलेंस बाय जेनेटिक मेकअप कम है एज कंपेयर टू यूरोपियन पॉपुलेशन। अब जब इस तरह की कोई जियोग्राफिकल चेंज कोई देखोगे ना, फिर कोई जियोग्राफिकल रैशनल बनाओगे कि भाईजान दुनिया तो कहती है कि ये ऐसे है, लेकिन हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ दिस रेफरेंस मैं ये कहता हूं कि हमारा डीवीटी की प्रेवलेंस कम है। तो फिर उसके ऊपर तुम अपना एक स्टडी डिजाइन बना सकते हो कि जी मैं देखता हूं कि मॉडरेट रिस्क पे डीवीटी प्रोफिलैक्सिस दिया जाए या ना दिया जाए तो आउटकम कैसे होगा, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेवलेंस स्टडी ऑफ योर लोकल पॉपुलेशन। लेकिन तुम कहो कि जी भाईजान लैब कोली मंडी बहाउद्दीन में मैंने शुरू की है तो देखते हैं कि जी ओपन कोली बेहतर है, लैब कोली बेहतर है, ये रैशनल नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये 3 पैराग्राफ्स को हम एक्स्ट्रापोलेट कैसे करेंगे। हम डिजीज प्रेवलेंस की बात कर सकते हैं पहले पैराग्राफ में, ऑपरेशन कितने हुए हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ आएगा तो डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे बात करें, डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी ना पढ़ाएं, तो डायरेक्ट जो आपका टॉपिक है उस पर जंप करें और उसके बारे में बात करें कि भाईजान डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस इन वोग हैं एट द मोमेंट इंक्लूडिंग योर ट्रीटमेंट ऑप्शन दैट इज फिनोल। तो आप बताएं फिनोल जो है ना, इससे पहले फिनोल से पहले ये भी काम होता था, ये भी होता था, ये भी होता था, अब फिनोल भी आना शुरू हो गया। ये सेकंड पैराग्राफ है आपका। और थर्ड पैराग्राफ में फिर फिनोल की जो आपने रैशनल बनाना है ना उसके ऊपर बात करें। अब रैशनल बनाने के बहुत सारे तरीकेकार हो सकते हैं। आप ये कहें कि फिनोल प्रीवियसली यूज ही कभी नहीं हुआ, मैं पहली बार यूज करने जा रहा हूं। अगर यूज हुआ तो फिनोल प्रीवियसली यूज बट विद कंट्रोवर्शियल रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ हीलिंग। हीलिंग के ऊपर उसके रिजल्ट्स कंट्रोवर्शियल थे। आप इससे भी आगे चले जाएं, आप कहेंगी हीलिंग के रिजल्ट्स तो कंपेरेबल थे, लेकिन हीलिंग के अलावा कोई और वेरिएबल, डिस्चार्ज है, रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटी है, कॉस्मिसिस है, पेशेंट सेटिस्फैक्शन है, इन वेरिएबल्स के रिजल्ट कंट्रोवर्शियल थे। तो आप कहें मैं इसको रैशनल बनाना चाहता हूं। आप उससे भी आगे चले जाएं, आप कहें कि सबके ऊपर रिजल्ट्स ठीक आ जाते हैं, फिनोल की प्रिपरेशन पे बात हो सकती कि क्या फिनोल लिक्विड फॉर्म में आपके पास आ रहा था या क्रिस्टल फॉर्म में आ रहा था। जो आपकी पुरानी स्टडीज हैं वो लिक्विड फॉर्म के फिनोल पे हुई, क्रिस्टल पे कभी काम ही नहीं हुआ। आप उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे बात कर लें कि फिनोल की किस कंसंट्रेशन पे, ये पुराना डाटा है सारा का सारा, इस कंसंट्रेशन को चेंज करके देखते हैं क्या वैसे इफेक्ट्स आते हैं कि नहीं आते। आप इसी तरह से कॉन्टैक्ट टाइम ऑफ फिनोल की बात कर सकते हैं। आप कहें जी पहली जितनी भी स्टडी है वो 3-3 मिनट का कॉन्टैक्ट टाइम दे रही थी, हम 5 मिनट पे करके देखते हैं या 2 मिनट पे करके देखते हैं। तो रैशनल ऐसे लिखा जाएगा और इसके पीछे बैकग्राउंड होगा, रेफरेंस होगा। तो ये जो रैशनल है ना कि जी हम न्यू हॉस्पिटल में पहली स्टडी करने जा रहे हैं और मैंने कोई नया काम कर देना है जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था, ऐसे नहीं होता। ये बात यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? इंट्रोडक्शन के बारे में कोई कंफ्यूजन? हम आगे चलें। इंट्रोडक्शन के बाद अगली चीज आती है ऑपरेशनल डेफिनेशंस। Outcome of phenol application in pilonidal sinus disease in terms of healing. ऑपरेशनल डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? आप क्या लिखोगे बच्चे? इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन में क्या लिखोगे? ब्लाइंड आइडिया। तुम्हारा क्या ख्याल है ऑपरेशनल डेफिनेशन किस चीज की लिखी जानी चाहिए? मैडम आप अपनी सिनॉप्सिस बना रहे होंगे तो क्या लिखेंगे?
हीलिंग के बारे में कुछ बातें कर लेंगे, पाइलोनेडल साइनस की एग्जैक्ट डेफिनेशन पे बात करेंगे, और हमारा क्या ख्याल है भाई, क्या लिखोगे? और फिनोल की कौन सी कंसंट्रेशन में बात होगी? अरसलान का क्या ख्याल है भाई? ऑपरेशनल डेफिनेशन किस चीज की लिखनी है? पाइलोनेडल साइनस डिजीज को डिफाइन करें आप, ठीक है? और कोई बात? हीलिंग के आउटकम से क्या मुराद है? ऑपरेशनल डेफिनेशन की बात हो रही है अरसलान। हीलिंग की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? हीलिंग की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? मैडम आप कुछ बताना चाहिए? डॉक्टर हसन आप कुछ आइडिया देते, ऑपरेशनल डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा? हम नॉर्मली जब सिनॉप्सिस देखते हैं ना, तो आपको ऑपरेशनल डेफिनेशन नजर आएगी, पाइलोनेडल साइनस डिजीज, इन दिस डिजीज अ पिट इज सीन इन द नेटल क्लेफ्ट, सॉर्ट ऑफ इस तरह की डेफिनेशन होगी। आपको फिनोल नजर आएगा लिखा हुआ, फिनोल इज अ कंपाउंड, और आगे उसकी केमिस्ट्री और वो उस वाली लाइनें शुरू हो जाएंगी। और हीलिंग, वुंड हीलिंग इज अ फिनोमेना इन विच द वुंड गेट्स हील्ड। हमें ऐसे सिनॉप्सिस नजर आते हैं। तो आपको हीलिंग की ये डेफिनेशन नजर आ रही होगी, फिनोल की ऐसी बातें लिखी होंगी, और ये बातें ऐसी लिखी होंगी पाइलोनेडल साइनस डिजीज के बारे में, जो कि काम ठीक नहीं है। ऑपरेशनल डेफिनेशन होनी किस चीज की चाहिए बाय रूल? मैडम एक बात ध्यान में रखें, देखें जो पाइलोनेडल साइनस डिजीज है, आपने इंक्लूजन क्राइटेरिया में क्या लिखना है? आपने इंक्लूजन क्राइटेरिया में क्या लिखना है? आपको नहीं लगता ये जो आप पाइलोनेडल साइनस डिजीज की डेफिनेशन की बात करें, ये एक्चुअली आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया, ये डेफिनेशन तो वहां जानी चाहिए थी। तो पाइलोनेडल पेशेंट विद दिस साइन एंड सिम्टम documented to have a pilonidal sinus disease by a consultant general surgeon will be enrolled in my study। तो ये बात तो इंक्लूजन क्राइटेरिया की बात है, तो ये डिफाइन ही किया मैंने, ये डिफाइन ही तो किया। ये थोड़ी सी लोगों में कंट्रोवर्सी रहती है, अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात इसके ऊपर और भी होगी। फिर फिनोल और हीलिंग के बारे में बात ऐसी हो रही है। अब देखिए करने वाला काम कैसे है। बाय बुक ना मैडम, ओनली आउटकम वेरिएबल्स, आउटकम वेरिएबल शुड बी डिफाइंड। आउटकम वेरिएबल आपकी सिनॉप्सिस में क्या है? हीलिंग। आपकी हीलिंग की डेफिनेशन क्या है? ये ऑपरेशनल डेफिनेशन जो हमने लिखा ना कि हीलिंग इज अ फिनोमेना इन विच द वुंड गेट्स हील्ड, ये जो बुकिश बातें ऑपरेशनल डेफिनेशन में नहीं आएंगी। आपने हीलिंग का क्राइटेरिया क्या बनाया? आप एक वुंड को देख रहे हैं, वुंड भर रहा है, बंद हो रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, रेड हुआ है, एडिमेटस हुआ है, आपने कब कहना है कि ये जो है ना यार ये हील हो गया हुआ? कोई स्कोर लगाना चाहते हैं, उसको कोई ऑब्जेक्टिव तरीके से काम करना चाहते हैं, कोई सब्जेक्टिव तरीके से काम करना चाहते हैं। पहले जो स्टडीज हुई हैं उन्होंने हीलिंग को कैसे डॉक्यूमेंट किया था? तो आपके पास 5, 6, 7 स्टडीज ऐसी मिल जाएं जो आपको सेम हीलिंग का डेफिनेशन दे पाएं, कोई एक स्कोर दे पाएं, आप वो स्कोर उठा सकते हैं। लेकिन वो आपकी अपनी डेफिनेशन, वो आपकी अपनी डेफिनेशन है कि हीलिंग की डेफिनेशन क्या होगी। बुक वाली डेफिनेशन, जो बुक वाली बात है ना, वो बात यहां पर नहीं होगी।
तो ऑपरेशनल डेफिनेशन आपके सिर्फ आउटकम वेरिएबल की होगी। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, किताब की बात नहीं करनी। और आप बताएं कि आप अपनी स्टडी के अंदर क्या काम करने जा रहे हैं। बुकिश बात नहीं होगी, प्रोसीजर की बात नहीं होगी, डिजीज पैथोलॉजी की बात नहीं होगी, बात होगी सिर्फ आउटकम वेरिएबल की। बाकी बातें सारी कहीं ना कहीं और चली जाती हैं। क्या चीज? हाँ, आगे चलें जरा, आपको नजर आएगा कि जो आपने बातें की है ना, कुछ बातें इंक्लूजन क्राइटेरिया में चली जानी है, कुछ बातें मेथोडोलॉजी में चली जानी है। इसलिए तो कह रहा हूं कि इस बात को ध्यान में बिठाएं एडम, के हमें सिर्फ आउटकम वेरिएबल को यहां पे बात करनी, सिर्फ आउटकम वेरिएबल बात करें, बाकी सारी चीजें कहीं ना कहीं और एडजस्ट हो रही होंगी, बाकी सारी चीजें कहीं ना कहीं और एडजस्ट हो रही होंगी। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखी कैसे जानी चाहिए? हमने लिटरेचर ढूंढा तो हमें एक साउथहैम्पटन स्कोर नजर आ गया। तो आपने कहा कि मैंने अपनी स्टडी में जब फिनोल लगाना है तो मैंने हीलिंग उसको कहना है जब साउथहैम्पटन स्कोर को यूज करते हुए मैं उसका स्कोर कैलकुलेट करूंगा, और फिर उसको हम ग्रेड कर लेंगे 0 to 6। 0 मीन्स पुअर हीलिंग एंड 6 मीन्स मैक्सिमम हीलिंग, और स्कोरिंग सिस्टम में अक्षर बना के लगा दें पीछे। मैडम, जब हम HB और ये जब इस तरह की बात करते हैं ना, तो मेरा अपना ख्याल है कि आप ये बताएं कि हमने HB जो है ना ये कैलकुलेट करनी है, इसको आपका एनालाइजर कौन सा यूज होगा, और फिर एनालाइजर यूज करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू का आप उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? क्या आपने उस वैल्यू को एग्जैक्ट उस वैल्यू की तरह से ही लिखना है या आपने उसको किसी ग्रेड के अंदर लेके आना है? ये बात आपने उस पर बतानी है। मैडम, इसके ऊपर ये देखें ना, 0 to 6 एक टेबल है, तो 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे एक टेबल है, वो बना हुआ कि इस पे क्या रीडिंग आ रही, तो वो मैं टेबल डालूंगा तो समझ आएगी ना कि ये बात क्या हो रही। तो आप उसको एक अक्षर बना के अटैच कर दें। तो आप, मेरा अपना ख्याल ये होता है कि अगर आप ऑपरेशनल डेफिनेशन उठा रहे हैं तो बेहतर हल ये है कि आपके पास 5-7 आर्टिकल्स हों जो सेम डिजीज पैथोलॉजी पे सेम आउटकम वेरिएबल को सेम तरीके से देख रहे हों। तो फिर आप जब अपनी स्टडी की डिस्कशन लिखना शुरू करेंगे ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको पता लगेगा ये भी हीलिंग जो कह रहा था, इसकी जो परसेंटेज है, इस हीलिंग की परसेंटेज, इस हीलिंग की परसेंटेज, इन सब की पीछे असेस करने का तरीकाकार सेम था। तो अगर असेस करने का तरीकाकार डिफरेंट होगा तो फिर तो रिजल्ट सारे कंपेयर करना, आप कैसे उसको कंपेयर कर सकेंगे? इसलिए ये ढूंढना आपका काम है कि ये जो मैंने ऑपरेशनल डेफिनेशन के तौर पे जिस डेफिनेशन को उठाया है, ये इससे इस पे बेस करते और कितने आर्टिकल्स हैं मेरे पास। ये बात क्लियर होती है? ये जो बात है ना, ये बात यहां पर भी लिखी जा सकती है और ये बात मेथोडोलॉजी में भी जा सकती है। आप सिर्फ मुंपल वुंड हीलिंग की डेफिनेशन लिखें ऑपरेशनल डेफिनेशन में, कौन चेक करेगा, कब कब चेक की जाएगी, एंड पॉइंट क्या होगा, ये बात मेथोडोलॉजी का सेक्शन है बेसिकली। यहां पर सिर्फ डेफिनेशन डालें कि आपने वुंड हीलिंग कहना किसको है। फिनोल के बारे में अगर आपने कोई बात लिखनी है कि फिनोल कौन सा यूज होगा, फिनोल कितनी कंसंट्रेशन में यूज होगा, फिनोल का कांटेक्ट टाइम क्या होगा, ये भी बात सारी मेथोडोलॉजी में चली जाएगी। पाइलोनेडल साइनस डिजीज आपने किसको कहना है, ये बात सारी इंक्लूजन क्राइटेरिया में चली जाएगी। ये बात वहां पर डिफाइन करके जाएं फुल फ्लेज। पेशेंट विद दीज साइंस and symptoms documented to have a pilonidal sinus disease by a consultant general surgeon will be enrolled in my study of both sexes and age of more than 18 with ASA grade 1 and 2। ये आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया। यहां पर आप अपना क्राइटेरिया लिखें डायग्नोसिस का, एज डाल दें, जेंडर डाल दें, ASA ग्रेड डाल दें। ये बात यहां तक क्लियर है?
ऑपरेशनल डेफिनेशन के बारे में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, आगे चले। सैंपलिंग टेक्निक के बारे में ये भी हमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। मेरा अपना ख्याल है कि मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ें ना हिसल बैसल नहीं है। आपको एक नॉन प्रोबेबिलिटी चीज़ नज़र आती है जिसमें परपोसिव सैंपलिंग की बात की जानी चाहिए और कंजेक्टिव की बात की जानी चाहिए। और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में जो मेरा अपना ख्याल है, सिर्फ एक कम से कम समझ जरूर लो कि इस काम ने होना कैसे है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, ये बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है प्रोपोसिव सैंपलिंग और कंजेक्टिव सैंपलिंग का डिफरेंस क्या है? एनी आइडिया? मैडम मैं सुबह 8 बजे ओपीडी में गया और मेरा आज प्लान है कि जी जितने पाइलोनेडल साइनस के मरीज आएंगे ना, तो मैंने आज सारे अपनी स्टडी में उठाने। एक अपना क्राइटेरिया मैंने बनाया हुआ था, इंक्लूजन क्राइटेरिया। अब उसके अगेंस्ट मैंने देखने शुरू किए। अब मैं सुबह 8 बजे गया, 10 बजे तक मुझे कुछ 4-5 मरीज़ नज़र आ गए। 4-5 मरीज़ मैंने इनरोल किए। 10 बजे ज़रा चाय की तलब हुई, कॉफ़ी की तलब हुई, तो हम कॉफ़ी पीने चले गए। कॉफ़ी पी के वापस आए तो पौना घंटा लग गया। तो मुझे जो वहाँ पर बंदा था उसने कहा डॉक्टर साहब 2 मरीज़ और आए थे, तो आपका इंतज़ार करके चले गए। आप 11:15 बजे आपने दोबारा काम शुरू किया और फिर 12:30 के बजे करीब प्रोफेसर साहब की कॉल आ गई कि डिपार्टमेंट आए ज़रा। आपने कुछ 4 मरीज़ और देखे थे, आप उठ के डिपार्टमेंट चले गए और फिर वापस नहीं आ सके। रजिस्ट्रार ने बताया कि यार 4 मरीज़ और तेरे आके बैठ के तेरा इंतज़ार करके चले गए। ऐसे हो रहा होता है ना, ग्राउंड पे काम तो ऐसे ही हो रहा है। ये कौन सी टेक्निक है? ये जो मैंने आपके सामने बोली, ये कौन सी टेक्निक है? You have an inclusion criteria and you are picking the patient at your own ease. सारे काम भी चल रहे हैं और डाटा कलेक्शन भी हो रही है ना। तो ये यार इन दोनों में से क्या हो सकती है? फर्स्ट वाली का नाम क्या लिखा हुआ है? पर्पोसिव सैंपलिंग, ठीक है। कन्वीनियंट और पर्पोसिव, हाँ पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि ये दोनों चीज़ें ना ओवरलैप करती हैं बहुत सारी। और कन्वीनियंट मुझे लगता है कि आप जो है ना वर्ड को ज़्यादा यूज़ करें जब हम नॉन मेडिकल बातें करते हैं। मतलब कन्वीनियंट का मतलब ये है कि मैं एक माइक लेके एक हॉल के अंदर घुस गया हूँ, मॉल के अंदर, और जाके ना कभी उसको पकड़ा, कभी उसको पकड़ा, कभी उसको पकड़ा, उससे पूछ, उससे पूछ, उससे पूछ, तो ये कन्वीनियंस में चली जाती है बात। तो पर्पोसिव जो है ना, जब आप, और वहाँ पर कोई डिफाइंड इंक्लूजन क्राइटेरिया नहीं है, जेड़ा नज़र आया ना मैं उन्हें माइक पढ़ा देना। तो जब डिफाइंड इंक्लूजन क्राइटेरिया की बात करोगे तो नॉन प्रोबेबिलिटी पर्पोसिव पे आ जाओगे। और लेकिन अगर दूसरी बात, अगर तुमने 8 से 2 बजे तक कॉफ़ी नहीं पी और बैठ के काम किया है ना, कोई एक बच्चा मिस नहीं किया, कोई एक पेशेंट मिस नहीं किया, तो यही चीज़ नॉन प्रोबेबिलिटी कंजेक्टिव में जा पड़ेगी। तो कम से कम इतना काम तो करो कि नॉन प्रोबेबिलिटी कंजेक्टिव पे काम करो। हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी पर्पोसिव पे काम करते हैं अपनी ईज के साथ। अगली बात, ये सिंपल, आपको मुझे एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक हर बच्चा अपनी सिनॉप्सिस में लिखता है, तो तुम्हें कम से कम ये आइडिया हो कि मुझे एक्सप्लेन कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली भी आ गए। हम इसे सिर्फ 2 मिनट दें सर, सिर्फ 2 मिनट में फिर आपको देता हूँ। बैठे। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, सिंपल आइडिया लो के काम में होना कैसे, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपना ओपीडी का रजिस्टर उठाते हैं और पाइलोनेडल साइनस डिजीज के पिछले 6 महीने के पेशेंट उठा के देखते हैं कि पिछले 6 महीने में उन्हें कितने मरीज देखे पाइलोनेडल साइनस डिजीज के। सपोज 70 आए, तो पिछले 6 महीने में पाइलोनेडल साइनस डिजीज के 70 मरीज मैंने देखे और हमारा सैंपल साइज 21 का है।
जो हमने स्टैटिस्टिक्स के साथ बैठ के निकाल लिया। अब अगला काम क्या करना है, आपके पास ये एक वेबसाइट है, इसको खोलें तो इसके ऊपर आपको ये एक इंटरफेस नज़र आएगा। आप उसके अंदर एंट्री करें, उसे कहें कि जी जनरेट 21 रैंडम नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 70 फॉर्मेट ऑफ 2 कॉलम्स। आप उसको ये फिगर दें और क्लिक करें तो वो आपके सामने इस तरह से 2 टेबल बना देगा। तो उसने आपने 21 के लिए रैंडम नंबर टेबल से वैल्यूज जनरेट की। अब इस पर गौर करें कि हो क्या रहा है। नंबर 1 पेशेंट, नंबर 2 पेशेंट, उसके बाद देखें तो नंबर 8 पेशेंट। तो ये 3, 4, 5, 6, 7 ये कहां गए? डॉक्टर सिंह ये कहां गए? एक्सक्लूड हो गए। इसको मैं बताता हूं कि गए कहां पे। अब क्या करते हैं, आप ये जो लिस्ट है ना आपके पास, इस लिस्ट को पकड़ के आप ओपीडी में चले जाते हैं और ओपीडी में जाके क्या करते हैं, पहला मरीज आया तो ग्रुप ए का मरीज है, दूसरा मरीज आया ग्रुप बी का मरीज है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां जो आएगा वो स्टडी में इंक्लूड नहीं होगा। फिर जो 8वां मरीज आएगा वो ग्रुप ए का मरीज है। 8 के बाद अगली फिगर क्या आ रही है? 11। 9वां, 10वां जो आएगा वो स्टडी में नहीं आएगा। 11वां पकड़ के आप फिर ग्रुप ए के अंदर डाल लेंगे। फिर उसके बाद अगली फिगर क्या आ रही है? वो 15 आ रही है, 12 आ रही है। 12 इस तरफ आ गया, 15 इस तरफ आ गया। आपने इस टेबल को सामने रखना है और मरीजों को उठा के ग्रुप की एलोकेशन करनी। तो इससे हो क्या रहा है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक में 21 मरीज देखने के लिए आपको 70 मरीज देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर यही काम आप कंसेक्टिव में ले जाते तो 21 डाटा लेने के लिए 21 ही पेशेंट देखने पड़ते आपको। ये बेसिक डिफरेंस है। इसका मतलब है एफर्ट करनी पड़ेगी अगर आपने सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक लिखनी है, और अगर एफर्ट करोगे तो स्टडी की पावर ऊपर जाएगी। तुमने वहां पर लिखा हुआ है कंसेक्टिव सैंपलिंग या सिंपल रैंडम सैंपलिंग, तो दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों की पावर में डिफरेंस होगा, दोनों की वर्थ में डिफरेंस होगा। ये बात क्लियर होती है? ख्याल हम डॉक्टर अली को दें, हम उनको सुनना चाहते हैं, हम अपनी बातें तो करते रहेंगे। नहीं सर, थैंक यू। Thank you so much, Dr. Zishan, for introducing the common pitfalls which we come across when we are reviewing synopsis। और एक चीज़ जहाँ पे भी बात ख़त्म हुई थी, आई मीन बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ऑफ मेडिसिन, तो एक बहुत जो कॉमन आई थिंक हर synopsis में चीज़ आती है, मेजॉरिटी आर रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स, इनके synopsis बने होते हैं और ऑलमोस्ट विदाउट फेल सब में सैम्पलिंग जो है ना वो कन्वीनियंस या कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग लिखी होती है। टाइटल है RCT एंड दैट सॉर्ट ऑफ, सो हर दफ़ा ही तकरीबन सिमिलर कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। It's our absolute honor to invite Dr. Ali Javed. Thank you so much for joining us. Dr. Ali Javed is Head Translational Neuropsychiatry Research Group Trend Lab, Luca Civics Research Network. I hope I've pronounced it okay, it's a very difficult name. Port Polish Center for Technology Development from Poland. So he is going to discuss about the research and grant writing, as well as would be happy to answer the questions raised by any of the participants. Please join us in welcoming him to the dais, please. Good morning, especially like all the young, like aspiring scientists and physicians here. It's my absolute honor to be here, and first time actually at King Edward's, so I'm definitely excited about that. So when it comes to scientific writing and grant writing and paper writing, I think you guys are quite lucky, especially the young ones, that right now everything is easily accessible to you.
You will find like hundreds of YouTube videos. You'll find editorials. You'll find like guidelines from the Association of Medical Journal Editors on how to write a paper. There are very nice grant templates. But one thing which I always found to be like a little bit less emphasized on is how to actually write the narrative. Like how do you actually tell the story? There is a storytelling in science as well, and that we often see has been like missing. And like these very interesting photos you see here, these are from my last trip to Oxford, where I was also where I also conducted a workshop on the art of scientific writing. And I thought that this was actually like my own initiative. I proposed that besides the keynote, which I'll be giving later today, I also wanted to talk to you guys about how to actually do the scientific storytelling. So all of you know, of course, about how to structure a paper, right? The MRAD, introduction, method, research, discussion. Similarly, for grant writing, you have like all these different sections. I think all of that is probably very accessible to you, and you're all familiar with that. But of course, I'll be happy to take questions about that as well. But let's for now focus on actually the scientific writing in itself. And before we get to that, I also wanted to share like a very interesting anecdote. You guys can hear me at the back, yeah? Okay, so I'll probably just stay here. It's going to be more interactive like this. And this whole, the next half an hour is going to be very interactive. I want all you guys to participate from the back as well. All right, so now we know that you write grants, that's how like research gets funded, but I just wanted to share a very interesting anecdote. This is about how scientists, or doctors, etc., how they used to get funding back in the day. So this is the story of Alexander Graham Bell, which all of you probably very well aware of. And when he wanted to make like this harmonic telegraph, which we all know now as the telephone, this is how he acquired funding. He got much of it from the wealthy father of one of his students, 16-year-old Mabel Hubbard. Bell and Hubbard will eventually marry. So those kind of things are not possible in medicine or science now, for good reasons. It's good that they are not possible, and instead we have to rely on our scientific storytelling skills, in which we pitch our ideas in form of grants, or eventually convince people that our data with our results in form of research papers. And thank you very much. And what I've learned over the years, and I published my first research paper when I was a second-year medical student. It's 2005. I was at AKU at Arfan University in Karachi, and I remember like the first time I wrote a manuscript. Of course, the way we are taught in AKU, like everyone knows like how to write a paper in terms of, again, introduction, method, research. There's a huge focus on sampling, community health sciences, like all these modules are there. But the first comment which I got from my reviewer was that, technically the paper is sound, but in like very politically correct way, the reviewer pointed out that the writing is horrible, So over the years, it's been like 21 years now, I've figured out that actually scientific storytelling follows some very interesting linguistic principles. And actually, if you follow those, number one, your writing will always be fluent. And number two, you will never get this writer's block, Of course, now nobody gets writer's block because you all write from ChatGPT, but that's not the way to go. That completely will compromise your creativity and storytelling skills and narrative building skills. And of course, you get caught out as well. So, of course, you can use it for linguistic support, but always write your first draft. And trust me, if you write by following some very interesting, tips and hacks, you will see that your scientific writing will be very fluent. So, in every sentence, which you read in a scientific manuscript or a grant, there is a subject
and there is a complement. And what do you guys think is the subject? And what is the complement? A bit intuitive, actually. So I want you guys, like, let's keep it interactive, yeah? So people at the back, I want you to contribute, like, just to speak up. Or we can do it in form of a practice, okay? So the trick is that the complement of the first sentence should become the subject of the next sentence. So in every sentence, there's a subject, which is what the whole sentence is about, right? And then there's something accompanying it, something which describes its trait, right? Just how in linguistics, how there are adjectives, right? So you can say that the complement is a bit like an adjective. And then it accompanies the subject, but to maintain fluency, how you write is that the complement of the first sentence should become the subject of the next sentence. So this is a paragraph from one of our recent manuscripts from Nature Translational Psychiatry. It got published in October, and I picked a paragraph from there just to exemplify it to you guys. So this is how it goes. In conclusion, this study establishes a significant association between maternal ACE, so ACE is adverse childhood experiences. This was already explained before, and alterations in the microRNAs and fatty acid content of breast milk, which may serve as early predictors of temperamental trajectories in the offspring. So in our study, we found out that adverse childhood experiences, childhood trauma in women, it persists epigenetically. We find changes in their epigenetic factors and microRNAs and fatty acids in the human breast milk, which actually then can predict the behavioral trajectories of the offspring already at the 5 months or 1 year of age. We call it like intergenerational transmission, which is also what my keynote will be about. But basically, if you read this sentence, in conclusion, this study establishes a significant association between maternal ACE and alteration in the microRNAs and fatty acid content of breast milk, which may serve as early predictors of temperamental trajectories in the offspring. Can someone find out what is the subject here? Speak up. I hear some mumbling, but please speak up. Exactly. So the association between maternal ACE and microRNAs and fatty acid in the breast milk, that is the subject, right? That is the main part of the sentence. And then the complement is early predictors of temperamental trajectories in the offspring, right? That is something which is added up to that. Now to maintain fluency and to also give like this nice narrative building, in the next sentence, we convert the complement into the main subject. So here, complement is predictors of temperamental trajectories in the offspring. Next sentence, however, it is critical to acknowledge that the effects of maternal ACE on offspring are likely mediated through multiple intergeneration pathways. See, so we didn't repeat the same thing because then it would become like repetitive and it would start like appearing boring. But basically, the complement is turning into the subject. Temperamental trajectories in the offspring, and in here we say effects of maternal ACE on offspring, right? So you see how the complement got converted into subject, and what is the complement in this sentence now, in the second sentence? Yeah? Multiple intergenerational pathways, right? Next sentence, these include epigenetic modifications in the oocyte, microbiome transmission during vaginal delivery, and maternal behaviors both during and after pregnancy, right? So multiple intergenerational pathways, which is the complement, now gets converted into the subject, and we also elaborate on it, that these include epigenetic modifications, microbiome, maternal behaviors during and after pregnancy, in addition to lactation. Now what is the complement here? In addition to lactation, right? The next sentence, additionally, the present study did not account for paternal influences, which could represent an important source of confounding and warrant further investigations. Those additional factors now become the subject. We elaborated on it by saying paternal influences,
and then we are saying an important source of confounding and warrant further investigations, right? So what did we do? We added this complement of further investigations, which already gives us a transition to the next paragraph. And then, to establish the biological plausibility of the observed associations and to determine any causal mechanisms, we are initiating mechanistic studies in the mouse model, blah, 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 right? So what you see is that further investigations, which was the complement, now gave us a lead up and became the subject of the next paragraph, right? So what are the advantages of writing and building a narrative like this? Fluency. Nothing is abrupt. There are transitions. And honestly, like once I learned this, like I think it was about 10 years ago, I see a massive difference in the reception of my manuscripts. Like, from the editors, from the reviewers. And I would also tell you to do this experiment. Just write anything yourself, anything scientific. Put it into ChatGPT, especially the last version, the premium one, ChatGPT 4 and above. And that's exactly what ChatGPT will do as well. Because it's all about just following this pattern in which there is this continuous fluency in narrative. The other advantage is, like I said, it will never give you writer's block because you would know what to write in the next sentence. You already have a complement, now that has become the subject. You can also do it as sort of like a trial. If you have something, if I had like more time today, I would actually also do like a hands-on exercise, but you all can do it yourself. Just take something you've written, turn it into the subject and complement sort of thing, and see whether the fluency improves. All right, some other scientific writing tips. It's important to be precise. It's important to have one idea per sentence and in a logical flow. And if you follow the subject and complement method, you automatically would have just one main idea per sentence. Always have a conclusive sentence in the end, just like how you saw in the example I gave you guys. And then, like, of course, like we always have a tendency to use things like however, it just becomes like a bit redundant and like repetitive if there are too many howevers in the same paragraph, right? You shouldn't do that. You can have one sentence with that, but you can always use synonyms like nonetheless, nevertheless. These are also the things where large language models and AI can be helpful. It can find like, these synonyms for you. Again, avoid using does a lot, but if needed, you can use synonyms. Avoid using technical jargons and abbreviations. In my example, you saw abbreviations, but they were already introduced in the manuscript before. And then, of course, this is something which I really want to highlight. This is, like, I don't know what's the obsession about using et al. By like Pakistani origin physician scientists. Like all the time they use et al. And actually, a lot of time I was even like sitting together with the editor of Nature Mental Health, and he was like, this is the most annoying thing we find, because number one, sometimes it's used also as a trick, like to signal to the reviewers that we are mentioning your name, so be nice to us. The other thing is that it's always better to talk about the qualitative and quantitative measure of the study without using et al. I think it probably comes from like when you're younger, you want to have your own et al. Kind of citation, so maybe that's why people use that, but please do not concede to this temptation. And again, it's important to effectively communicate, but not to impress. We don't need to use like thesaurus, we don't need to use words like a plethora of studies have revealed that. Like, this again is a very common tendency which I see in people from South Asia. Most of the times, these are the things which are considered like very annoying by the editors and the reviewers. If it can be simply communicated, better to just communicate simply without using these. You write to communicate, not to impress. All right. Then another thing where I find like a lot of students struggling is when to use the active voice, when to use the passive voice. And then, like again, what I figured out over the years is that there are no hard and fast rules, but there are some things which just like fit with the flow better. And
what I've realized is that clinical studies sound better with passive voice, and laboratory studies, they sound better with active voice. So examples, patients with prior history of dyslipidemia were classified as, right? I mean, so here we are talking about patients being classified, and instead of saying that, we classified the patients, right? I mean, we are just using the passive voice here. But when it involves things which are more about, something to do in the lab, something more at the mechanistic level, then I think active voice makes a lot more sense. Like we then assess if inhibition of H receptor will decrease viral entry, right? Now, just think about this. If we were using passive voice here, how would the sentence sound like? The dependence of viral entry on H receptor was assessed through. Like it would be a lot less fluent than just saying that we then assess if inhibition of H receptor will decrease viral entry, right? So these are some of the things which, again, it's not that you go and look up on Google and it would say that these are some like hard and fast rules, some guidelines. These are just the things which, over the years, by writing several manuscripts, I've realized, and this is how, when I do the trainings for my students, postdocs, etc., they use this and they are usually quite happy with that. Then again, present versus past tense, it can also sometimes be tricky and a bit problematic. And I think here it's a bit easier, I would say, compared to the active and passive voice. You use past tense when describing previous studies, procedures performed, assessments and results, but you use present tense when discussing implications and relevance. And then you would also see that specific types of scientific writing, for example, grants, they will have a lot more use of present tense compared to some of the others. Similarly, the discussion session will usually have a lot more present tense compared to describing the results, as well as the introduction methods, because those were the procedures performed or the data already acquired or the findings already presented. Any questions so far, by the way, on the subject complement method or this part? Yeah, that makes sense? Mm-hmm. Okay, this is going to be the hands-on exercise for today. You don't know, the people who wrote these, so this is completely anonymous, but these are actual pieces of write-up which I got to review, either as like a reviewer for a master thesis or a doctoral thesis or a manuscript, and I just wanted you guys to have like a flavor of how scientific writing can be adjusted, how it can be improved, and also what's out there. So I could simply tell you that there are 3 different pieces of writing here. One of them is completely obnoxious, one of them is not so bad, and one of them is somewhere in the middle, but I would want you guys to really walk through these and help us improve the write-up over there. Okay, let's start with this one. Upon the protein misfolding diseases, it is still unknown if the protein deposition causes the disease and the disease causes the protein aggregation, or if the protein deposition causes protein aggregation and the protein aggregation causes the disease. What's wrong with this sentence? Everything wrong. Everything is wrong with this, right? This is from a doctoral thesis, by the way, written by a German PhD student. But simply, what do you think this person is trying to explain? I think, so what I gathered is what this person is trying to explain is that it is not clear if protein aggregation, which is like a common pathological hallmark of protein misfolding diseases, if it is a pathological phenomena or it is just a byproduct of the disease. That is what this person is trying to explain, and that is an important question, right? Like some people say that, okay, beta amyloid is the reason for brain atrophy, and some people think that this is just a byproduct. This is like an indicator, but this is not directly contributing to the. So the idea itself is not wrong, but it is communicated in like a
pretty horrible way. Upon the protein misfolding disease, it is still not unknown. It is still unknown if the protein deposition caused the disease. And here, I think instead of and, if there was or, it would already be a little bit better. But there are many ways in which this sentence can be improved. Okay. The next sentence. But no matter which way is the right one, abnormal accumulation of mutant proteins are the pathological hallmark of various age-related neurodegenerative disorders like Alzheimer's disease, Parkinson's disease, transmissible spongiform encephalopathies, Huntington's disease, and ALS. This sentence is a bit better than the previous one, but again, many things are wrong with it. Yeah, what do you guys think? Mm-hmm. Yeah, that's one thing. The other is that, pathological hallmark of various age-related neurodegenerative disorders like Alzheimer's disease, Parkinson's disease. I mean, why to give like 6 different examples, right? I mean, if you really wanted to give an example, maybe 2 or 3 would have been enough. And then again, but no matter which way is the right one, right? I mean, again, if you just think about it, but no matter which way is the right one is something which can easily be substituted by something like nonetheless, nevertheless, however, right? So sometimes, like a lot of times, I think when people are writing, they think about, okay, how we would say this if we would be speaking, right? In speaking, you can say, but no matter which way is the right one, maybe you find it more expressive. But in writing, you have to be concise and precise. All right, let's go to this one. And here I also have an example of how I corrected the write-up over there, and this is something which we'll do together. Okay, the actual write-up was in 1869, a neurodegenerative disorder was termed and described for the first time as amyotrophic lateral sclerosis by Jean-Martin Charcot, a French neurologist. What is really completely unneeded, this whole sentence. And then the next is whereby amyotrophic stands for muscular atrophy and lateral sclerosis describe the scarring and hardening tissues in the lateral spinal cord. Thus, with this term, Charcot pointed out the major neuropathological features of the disease. Right? This was the actual write-up. I replaced it with amyotrophic lateral sclerosis, first described by Jean-Marie Charcot, is a fatal neurodegenerative disorder of upper and lower motor neurons. Right? So, number one, if you would ask me personally, I don't think it's also important to talk about who discovered the disease. Right? I mean, this is, this does not really matter in the context of what this thesis was about. But still, I was like, okay, if the student wanted to write that, let me accommodate that. Let me make it closer to what the student has written. But still, there is a lot of repetition here. It was described for the first time by ALS. Then it is explained what amyotrophic and lateral sclerosis means. And then does, with this term, Charcot pointed out the major neuropathological features of the disease. The problem is that also usually things like does, they are a bit conclusive, right? So that they should come in the last sentence, not somewhere in the middle of the paragraph, right? So there are several things which are repetitive here, which are incorrect here. Then the next sentence is the degeneration and loss of upper motor neurons is reflected by hyperreflexia and spasticity. So here, again, there was this repetition, degeneration and loss, right? You just have to use either. And then in ALS manifests as, this is how I change it. And then I'm continuing with that. And then this is the last one. This last one is not, I would say, as badly written as the others. But there are certain nuances here. There are certain things here which can be improved. And this is where I would again request you guys to be interactive, especially the people at the back. We are doing this for you. So the people in the front, they have already written each one at least 20 papers already. So this is mainly for you guys, okay? So
So microRNAs are small non-coding RNAs produced by most cells that have important regulatory functions within these cells. What is, what could be improved in this sentence? No, I mean, you're communicating with the broader audience, right? I mean, whoever is reading may not even know what microRNAs are, so that part is not really the problem. But there are certain other elements in this sentence which could be improved. Exactly. So microRNAs are small non-coding RNAs produced by most cells that have important regulatory functions within these cells. I mean, why to write by produced by most cells with regulatory functions within these cells? I mean, I can try to explain what this person is trying to do. That will become clear when you read the next sentence. MicroRNAs are also secreted in biological fluids like blood and circulate in the body. There is something else as well in this sentence which is not horribly wrong but could be improved. Yeah, what do you see is happening here? Yeah, so they are secreted in biological fluids like blood and circulate in the body, right? I mean, again, when they're secreted in the blood, do you really have to write circulate in the body, right? Now you connect these two sentences, and what this person is trying to explain is that microRNAs can either be produced by cells, and they have these kind of autocrine functions. So here they have important functions within the cells, or they can be released in the circulation. So what you would rather do is just make one sentence which combines both these ideas. Can anyone make an attempt at that? Just give it a shot. MicroRNAs are small non-coding RNAs. Yeah, with key regulatory functions intracellularly and in the circulation. Combines everything, right? Or even another way could be that microRNAs are small non-coding RNAs with critical autocrine and distant role, something like that. There are many ways in which this can be, just these two sentences can be combined and would convey the same meaning and would be a lot less complex. Okay, next sentence. Circulating small RNAs are present either within extracellular vesicles or bound to RNA binding proteins or to high density lipoproteins. Again, not horribly wrong, but this sentence could be improved. There's one part of this sentence which is also linguistically not correct. What is that? Yeah, you don't use so many ors in the same sentence, you just use once. Circulating small RNAs are present either within extracellular vesicles or bound to RNA binding proteins or to high density proteins. You can just say that circulating microRNAs are packaged within EVs or carried by high density lipoproteins. So something like that, which would be a lot simpler. Then the next sentence, they can be exchanged in between cells and circulate, for instance, from adipose tissue to liver cells or from carcinoma cells to endothelial cells. What's the problem with this sentence? Yeah. Number one, too many examples here, right? Another thing would be, when you say they can be exchanged in between cells and then circulate, it's also you're repeating the same concept over and over, right? Yeah, I mean, I think here the idea is that it's not only metastasis because they are also released from adipose tissue to liver cells,
right? So it's not only metastasis, but yeah, you can simply say that, in the whole paragraph, if you start by saying that microRNAs are small noded for non-coding RNAs with key regulatory roles. These roles can be intracellular or they can be between two different tissues. MicroRNAs are carried in the circulation, packaged in extracellular vesicles, or carried by high-density lipoproteins. This already communicates the exact same message which these 5 sentences are also doing, right? When you've already explained that they can be exchanged between cells, do you really even need this sentence? Because this is just a repetition of whatever was said before. And then finally, the last sentence is, today, whether microRNAs can also circulate from blood to germ cells is not well known. Number one, like, is you don't say things like today. Right? I mean, if you've written a paper in 2021 and somebody is reading in 2025, you still have to, be like time and context. It should be like well in place over there. So you don't use things like today. And then whether microRNAs can also circulate from blood to germ cells is not well known. What is one thing when you use whether? And whether is usually accompanied with or, right? Here, today, whether microRNAs can also circulate from blood to germ cells is not well known. What would be another way to write the same thing? You can say if, but there's also another way to do it. You can also simply say, this is a place where it would be nice to use however. However, it is not clear if microRNAs can also be communicated to the germ cells. That's it. Simply. Right? That would like combine everything, and then your paragraph would be solid, and then you would see that the reason why this paragraph is not so fluent is, number one, very repetitive. Number two, they actually miss the trick. If they followed the subject complement method here, it would already be flowing a lot better, right? So these are just some of the things which I wanted to share with you. Now I am open to questions. Thanks a lot also to Dr. Zishan who took care of the first parts, which was actually my request because I don't know how to drive in Lahore anymore, and it was also foggy. So I was like, don't start my session at 9. I'll come later. कोई क्वेश्चन है आप लोगों के? And the questions could be about anything, not only about this, but also grant writing or scientific writing in general. If not, then I thank you all, and this was like my little attempt to just pass on some knowledge to you guys. Thank you. Wonderful, sir. I wish we could have like 3 hours of a full workshop going through these examples because it is short time. I've learned a lot. And red lines देख के तो वो अपना colleague जितना कोई का manuscript लिखती हूँ तो वो देखती हूँ तो बड़ा red lines करके वापस आता है. So हम लोग हंसते हैं कि मेरा देखते हैं and he's so good writer, he's won lots of grants and so on. So we learn over time. So I think it's all everybody sitting here, they would have learned with me, nitty-gritty में जाके और then the other side when you are reviewing. When you are thesis वगैरह तो इतनी छोटी-छोटी चीजें हैं जो हम जनरली लिखते हुए नहीं ध्यान देते हैं, so these are areas. So I would request to have comments from our lovely guests over here as well. I would request from Dean Murtaza to kindly come and share this. Personally, his president-elect KEMCA-UK.
it has driven me back to Nonetheless, I wish we could have had lectures like this when we were studying. And actually, this block was not there when we were here. It's very unfortunate for us, but fortunate for you guys that we have now the availability of not only the equipment and also the presence of such worthy and well-renowned worldwide consultants and writers who have come all the way from Poland. And for us to come here in K is a privilege, and it is, we like coming here. And visit from Dr. Ali Javed from Poland, it's a blessing. And thank you very much. It is very thought-provoking. बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो यहाँ पे सुनने आए हैं सुबह सुबह फॉगी डे में, और स्पेशली जिसने मुझे कॉफी ला के दी. It has woken me up. मैं और प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे सुबह के how to transform medical education and also the examination system of the King Edward Medical College University, and we have set up a goal for us in the next 2 years, Professor Sam. You will have to bear me for the next 2 years as a KEMCA-UK president, and our main focus, our sister organization in America, which is KEMCA, old alumni association of North America. हम दोनों sisters organization. उनका main focus वो अमीर लोग हैं, they fund a lot. Our main focus is to train you a lot, to try to transfer some wisdom, whatever we have got or we have got left. To transfer it, transfer of knowledge, transfer of technology, and transfer a modernization of medical education to a modular level or in AI integrated. We very recently have done a workshop at Pakistan High Commission in London. We invited scholars and professors from Cambridge and Oxford, not only in medical field but also from the IT and digital. I was telling Professor Saab that, and I don't feel shame to share that story. I went to England in 1994-95, and I was appointed at Great Ormond Street Hospital Institute of Child Health. I'm a pediatrician by training. So I did not know how to use computers, and they had to postpone their course for 2 weeks for me and one of my colleagues from Ghana. They taught us how to use computers and how to integrate into medical research and stuff like that. So luckily we have moved on, and now I can see computers. Hopefully in the next couple of years, what Dr. Ali Javed has laid down the foundation, how to write synopsis and how to write and how the papers for the grants, we will make things better and much faster. And thank you very much once again for having us here. Do you guys have any questions or any point to make for me? More than happy to take. It was a pleasant surprise to see a colleague from Ealing who has worked there in Imperial and Ealing. Thank you very much for having me. Wish you all the best. Thank you so much, Dr. Azim, and I will request Professor Shakil to kindly share some comments before we give the certificate. Thank you very much.
Thank you for both of you for the excellent presentations, and thank you very much sir, for your introduction and thank you, Mr. Chan. I'm here as chairman of Biochemistry Department. I did my PhD. Unfortunately, at that time, resources are not so much easily fluently available, but I did that time. Professor साहब ने उस वक्त किया होगा. Nowadays, it's much easier to do the things. आज के प्रेजेंटेशन में जो डॉक्टर जिशान ने बात की, उसके बाद जो सन ने बात की, वेरी वैल्यूएबल, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी प्रैक्टिकल. मुझे बहुत सारी चीज़ों का आज दोबारा से रियलाइज हुआ कि हाँ, मैंने उस वक्त ये सारी मिस्टेक्स की थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी. यू आर लकी इनफ कि आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हैं. आज में जो साइंटिफिक राइटिंग है उसमें बहुत सारी बातें हुई. डॉक्टर जिशान की एक दो पॉइंट से मुझे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जरूर है. दैट्स अ ब्यूटी. उन्होंने जो बातें की है जो मेरे दिन में है फ्रेमवर्क थोड़ा डिफरेंट है, बट एट्स तो उन्होंने यही यूनिवर्सिटी के हवाले से या सीपीएससी के हवाले से बातें की थी. हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे सर, विद योर ड्यू परमिशन. जो सर ने बात की उनकी प्रेजेंटेशन भी उतनी ही फ्लुएंट थी जितनी उनकी सेंटेंसेस थे, और ये बहुत एफर्ट के बाद ये बात सामने आती है. तो डॉक्टर अली जवेद ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, वो नज़र आया उनकी प्रेजेंटेशन. सर थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द थिंग्स सो मच इजी फॉर अस. थैंक यू. Thank you so much, Professor Shakil. May I now request Dr. Adeem Murtaza Raja and Professor Shakil to kindly come so that we can give certificate to our chief guest as well as the main speaker, Professor Ali Javed, please. Dr. Zishan, आप भी साथ आ जाइए. Our first certificate is to Professor Ali Javed for his wonderful presentation. Dr. Ali, may I request if you will be able to give certificate to our... This is for Dr. Adeem Murtaza Raja. Our next certificate is for Professor Shakil. And our last certificate is for Professor Vishant Sarwar. Thank you so much for starting. And Sir. these are Royal College of Physicians approved certificates because this program is CPD approved. So may I have the honor to give it to you? And that's Miss Bella, sir, for you. And especially for my team. Thank you so much. Thank you so much. So the certificate for all the participants will be given to you via our coordinator for the session as well as for the organizers. May I request all of you to come for a group photo? We can have a group photo with all the participants. Better,